Thank you so much. Great to have you, Mona. Now let's dive right in. One of the things we hear a lot about is the importance of early years in child's development. Mona, can you please tell us why these years are so crucial and how they lay the foundation of child's future? बिल्कुल। तो बिफोर वी स्टार्ट आई वुड लाइक टू interact with all of the parents, the caregivers, those who are listening to us. The early years are very, very, very important. We all know now the awareness are in the at the high peak that everyone is listening that early childhood development. हमें बच्चों को ECD environment में डालना चाहिए. So everyone knows about ECD, that early childhood development, early years बहुत important है. But why they are important? So the first reason that why they are important, now research says that the 90% of your brain has developed till the age of 5. So 90% your brain. So it's Okay. all. And then the again one of the research says that आपके शुरू के 5 साल डिसाइड करते हैं आपके अगले 50 साल कैसे होंगे. तो इसी से हमें आइडिया हो जाता है कि किस तरीके से हमें अपने बच्चों को अर्ली ईयर्स में लेके चलना है और क्यों लेके चलना है. उसके ये 2 रिसर्च आई थिंक इनफ है ये समझाने के लिए कि क्यों अर्ली ईयर्स इतने इंपॉर्टेंट है. 90% इज ऑलमोस्ट सिर्फ 10% रह जाता है कि आप अपनी एक्सपीरियंसेस से उन चीज़ों को ग्रो करते हैं. सो ड्यूरिंग दैट दोज रिसर्च इज 1000 days स्पेसिफिकली जो कि माँ कंसीव करती है, जिसके बारे में हम बहुत कम बात करते हैं कि जब माँ कंसीव करती है तो वो जो 9 months है उसमें बच्चा भी सीख रहा होता है, आपको सुन रहा होता है, आपकी चीज़ों को, इन्वायरमेंट को समझ रहा होता है. सो व्हेन मदर कंसीव इट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट डे. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि हमारे जितने भी ब्रेन डेवलपमेंट के ब्रेन के न्यूरॉन करेक्शंस होते हैं वो सारे उन शुरू के 5 सालों में डेवलप हो रहे होते हैं और बहुत हाई स्पीड से डेवलप हो रहे होते हैं. सो फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी मतलब you and me will start learning about French or any other language, so might be we will take a year to understand or to start speaking that language. But if the same language, the child of 2 years or 3 years, if they will start learning that language, might be they will cope up in 1 month, 2 months, and 3 months. So we can see that how much speed they have in their brains, and we have to give them the opportunity to learn more about this. Wow, that's a valuable perspective, Mona. It really makes us realize how much these few early years of a child's life impact their overall development. Yes. Now, let's talk a bit more about the environment and the caregivers. We Yeah. all know that these factors play a huge role in shaping child's brain. Mona, how exactly do caregivers and the environment influence brain development during these formative years? Okay. So when we say that the child is blank, child don't understand, he or she is very small, 1 महीने का बच्चा क्या समझेगा, हमारे बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि हमारे मिथ्स हैं जो हम शुरू से सुनते आ रहे हैं. 9 महीने वो कहते हैं कि इसमें क्या बच्चा सीखेगा, वो माँ के पेट में है, Exactly. उसको क्या सुनाई देगा. तो ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें आप समझने की ज़रूरत है, जिनको अब रिसर्च ने और साइंस ने भी बताया है. तो जब वो बच्चा जब माँ कंसीव करती है, ठीक है, सो फ्रॉम 18 वीक्स जब आपके प्रेगनेंसी के हो जाते हैं, 16 वीक्स, सो दे स्टार्ट हेयरिंग. The child start hearing, they start developing all of the senses. Even the child in the womb can hear the voices of the environment. जो भी voices आपकी आप जो मदर सुन रही है वही voices सारी वो भी सुन रहा होता है बेबी. तो मदर जिस भी environment में है तो वो सारी voices उसको भी जा रही होती है. So that is very important to understand that the environment plays an important role while the mother is the lady, the girl is pregnant. That is again very important. Caregivers, those 9 months, if the mother is in the stress, if the mother is not getting the support from the from the surrounding, then again it's all impact on the brain development of the baby in the womb, in the fetus. तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये बात को समझें कि ये वन मैन शो नहीं है. It's includes all stakeholders. We can't say कि if the child is like that, so it's all the responsibility of the mother. It's the responsibility of the mother, the father, the family members, the environment, the surrounding, and every stakeholder who is involved with the child. बच्चा शुरू में जब माँ के पेट में है तो माँ जिस इन्वायरमेंट में, वो इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है कि वो किस तरह का है, काम है, रिलैक्स है, स्ट्रेस फ्री है, हाउ वी आर वर्किंग, हाउ वी आर टॉकिंग, वी आर कम्युनिकेटिंग. जितनी माँ रिलैक्स है उतना ही बच्चा रिलैक्स और काम होता है.
ठीक है. सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग के हाउ when the childs come in this world, so how we are giving them the chance to learn, to explore this world. ये एक पहले बहुत रिसर्च आती थी कि द चाइल्ड इज लाइक अ ब्लैंक स्लेट. इट्स नॉट Yeah. लाइक दैट. ठीक है, ये सिर्फ हम सुनते थे और हमें ऐसा लगता था कि नहीं बच्चा तो ब्लैंक है, हम जो उसको समझाएंगे वो कर लेगा. ऐसा नहीं होता. द बेबी हैज ऑलरेडी has a information, a lots of information in the brain. हमें सिर्फ उसको नर्चरिंग देनी है. जैसे पहले हम कहते थे कि हम टीचर्स हैं. Now we say that we are the facilitators. The child knows what to do. We are just facilitating them that how to do it, how to achieve that. So we are just providing them the environment, the support, and then the opportunities to learn, and they know how to do it. They can do it by themselves. So that is very important. The third thing that which is very important is that the responsive caregiving. Right now we are all listening that responsive caregiving. So what is responsive caregiving? It is all about that how a caregiver, see, I'm using the word caregiver because now we have a trend that we can send the infants, 3 months babies, to the daycare, to the social environment. So whoever is spending most of the time with the child, it can be a facilitator at the daycare. It can be grandparents who can, who are spending, because now we know that mother and father both are going for the work. So most of the time, so caregiver, the definition for the caregiver is that the most of the time who is spending with the child, they are responsible for providing them the good environment. So they are the person who can give the responsive caregiving to the child in the early years. So number one important thing that they need to give the quality time. They should allow the child to learn to communicate more and more. जब हम बात करते हैं छोटे बच्चों की, इन्फेंट्स की, तो बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास भी आते हैं कि इनसे हम क्या बातें करें. But they don't respond. They just smile. They are talking to you with the gestures. If they are smiling, that means they are enjoying whatever you are doing with them. Storytelling is one of the concept that still parents don't do with the child at home. स्टोरी टेलिंग हमें रोज करनी चाहिए बच्चे के साथ. रात में 5 मिनट निकाल के, 10 मिनट निकाल के, कोई भी एक अच्छी बुक लेके उनके साथ रीड करें. सो दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. सो रिस्पॉन्सिव केयर गिविंग इज अ कॉन्सेप्ट नाउ. It's like that the caregiver, who is the caregiver, can spend a quality time, talk to the child, tell the story to them, play with them, allow them to do something, then you can facilitate them, everything. Like for example, अब जब हम ये बात करते हैं तो एक और क्वेरी आ जाती है हमारे पास कि हम इतने रिसोर्सेस, इतने सारे ब्लॉग्स, इतने सारी चीज़ें एक्सपेंसिव हैं, सारी चीज़ें हम नहीं अफोर्ड कर सकते. सो हम वो चीज़ें अफोर्ड करने का कह भी नहीं. वी आर जस्ट सेइंग द क्वालिटी टाइम. टॉक टू देम. दिस डजंट रिक्वायर एनी रिसोर्स. Talk to that baby about something, about colors, about shapes, about the things that you have in environment, about the things that you have at home. हमें सिर्फ बात करनी है कि फॉर एग्जाम्पल आज आपने पूरा दिन क्या किया, मतलब मदर ने कुछ किया, and she's just telling to the child that I have done this, so today was my day, was a happy day, was not happy day, it was a very stressful day, I have to do lots of work. Simple conversations, and then the baby is enjoying the conversation, they connect with you, that is very important. So जब भी हम केयर गिवर्स को ये गाइड करते हैं तो स्टार्टिंग के 6 months it should be the parents, the caregiver should be the parents, those who should be very 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 involved in all of the activities of the infant. And then it's a start with the family members, and then the relatives, and then the social gatherings. So then they start communicating with the others. So that is very 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 important कि हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि हर जिम्मेदारी माँ की है, लेकिन उस बच्चे की डेवलपमेंट में मेरे ख्याल में हर स्टेक होल्डर जो कि उसके आसपास इन्वॉल्व है, उसके आसपास है, वो सब इतने ही रिस्पॉन्सिबल है उसकी नर्चरिंग के लिए जितनी कि उसकी मदर है. So that is very important to understand कि environment should be very calm, very opportunities होनी चाहिए बच्चे के लिए सीखने के लिए. Stressful नहीं होना चाहिए. The environment that we don't shout in the environment, we don't be loud, be relaxed, polite way में, positive way में. So the child is learning the same. बहुत अच्छी बात किसी ने कही थी कि अगर आपको देखना आपका बच्चा क्या कर रहा है तो आप देख लें कि आपने क्या किया है. So they reflect you. So that is very important to understand. If they are reflecting you, that means you have done that thing which the child is doing right now.
सो वी डोंट नीड टू बी वरी कि कहाँ से सीख कर आया है, सीखा आपसे ही है। वो सिर्फ अब इम्प्लीमेंट हो रहा है और आउटकम नजर आ रहा है हमें। That's so insightful, Mona. It's amazing how much power caregivers have in shaping the future of a child. Now, shifting gears a little, motivation is the key when it comes to learning, right? So, we all know that keeping children engaged in any particular activity can sometimes be really challenging. So, True. what are some strategies we can use to motivate children to learn? Um, so it's depend that how much you are motivated to Okay. nurture your child. That is one of the main basic. So as a mother, as a father, how much you are motivated, that is again one of the question mark. That if you are motivated, passionate about your child's learning, then you will find the way. If you are not interested in that, then again it's a question mark. Okay, so how we can do it? There are many activities that we can do with the child at home, and I will tell you the home based activities. I will not tell you the activities that which requires lots of resources and expensive resources. So number one, for example, if a mother is doing some work and the infant, the 3 months babies or might be 6 month babies, is lying on the bed or on the sofa or somewhere in the crib, so they can talk to them. हम क्या करते हैं, हम अपने काम में इतना बिजी होते हैं, हम उनसे बात नहीं करते, so we don't communicate. ठीक है, so we need to do communicate. Okay, so mama is cooking a meal for the family, mama is cooking a meal for you. So what mama is making, उसके बारे में बताना, उसका process बताना, and we can start conversation with the infant. This requires nothing. This requires just your conversation, your body gesture. And one of the activity that which I say, which I always suggest to the mothers or to the parents, whoever the caregiver is. So hold the baby like this in front of you and do the eye connection, do the eye contact with them and talk to them that how you are feeling today. Have you done with your meal? Have you done with your breakfast? Are you happy today? So that expression shows you how they're talking to you. They will be making a sounds. So we need to just ask the question and give a pause. Oh, how are you feeling today? So pause, let them comprehend, and then they will say they will do the babbling, might be they will make a little noise, or might be they will smile. So that's how that you can communicate, one of the component, that communication. And the benefits of this communication, this all communication, that they will enhance the vocabulary of the child. ठीक है, अगेन लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं, सो इट शुड बी होम बेस्ड, होम लैंग्वेज, द फर्स्ट फाउंडेशन शुड बी देयर विद द चाइल्ड टिल 2 years और 3 years. तो जो भी आपके घर की लैंग्वेज है वही आप प्रमोट करें. द रूल ऑफ द लैंग्वेज डेवलपमेंट इज वन एडल्ट वन लैंग्वेज. So decide before talking to the child that if the mother is speaking in English, so it should be 24 hours English. And then if Okay. the father is saying Urdu, so it should be Urdu. ठीक है, all 24 hours. So that is again very important to understand कि one adult one language. हम क्या करते हैं, हम सारी लैंग्वेज को मिक्स करके और बाइलैंग्वेज होके उस बच्चे से बात करते हैं. सो एक लैंग्वेज पे उस बच्चे की कमांड नहीं आती. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. द सेकेंड एक्टिविटी दैट वी कैन डू, दैट हम बहुत सारी दफ़ा मिल्क पैक के जो इंश्योर के डब्बे होते हैं, स्टील के टिन के बॉक्सेस होते हैं, वो हम थ्रो कर देते हैं. ठीक है, व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट गिव पुट द थिंग्स इन दैट बॉक्स, वी कैन क्लोज इट. पहले आप उसको वॉश कर लें सही से, देख लें कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो उसको हार्म करेगी या उसके सेफ्टी या सिक्योरिटी कंसर्न्स ना हो. एंड देन गिव द थिंग्स सो दे कैन डू द. ये बच्चे जो 1 साल के हो जाएंगे, जो आपकी क्रॉलिंग पे बच्चे आ जाएंगे, वो उस बॉक्स को लेंगे, ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे, उस चीज़ को एम्प्टी करेंगे, फुल कर देंगे, चीज़ों को भर देंगे अगेन. This again doesn't require any material from outside. ठीक है, so this kind of things that we can do at home and make a routine. That is very 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 important. For every learning, the daily routine should be set of a child. मतलब if you know कि हमें 8 बजे उठना है, तो 8 बजे हमें फिर सैटरडे संडे भी उठना है. ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. हमें एक टाइम डिसाइड कर लेना है कि ये मील टाइम है, ये एक्टिविटी टाइम है, ये स्टोरी टेलिंग टाइम है, या जो भी हम टाइम करते हैं. So that also impact on the brain development. Research ऐसा कहती है, those who have a good routine and the exact same routine all of the 7 days, they have a less behavior issues in the classrooms, in the later life. So that is very important, क्योंकि हम हमेशा मैस ही तब होते हैं जब हमारा रूटीन हमें पता नहीं होता कि what to do next.
Like if we both are sitting here, we know that at 3 o'clock we have to be there. So we are managing our task. So we are relaxed, we are chill. We know that at this, during this time we have to do this task. So we are not, rushing out of the time. So that is again very important in ECD. It should be, daily routine should be set by the parents, by the caregivers for the child. So we will see less mess and less behavior issues in the child. So अब डेली रूटीन कैसे करना है, अगेन इट्स अ लॉन्ग डिबेट ऑन दैट कि मेरा बच्चा तो नहीं